I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Please write yes in the comment box if I am audible. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. If I am audible, please write yes in the comment box. Good evening to all. I hope I am audible to you. If I am audible, please write yes in the comment box. Good evening to all. Good evening to all. I hope I am audible to you. If I am audible, please write yes in the comment box. If I am audible, please write yes in the comment box. Good evening to all. If I am audible, please write yes in the comment box so that I can start for today's session. Good evening to all. I hope I am audible to you. And if I am audible, please write yes in the comment box. I think I am audible to you clearly. So, right? So, good evening to all. I hope I am audible to you. Right? So, today we will see congestive cardiac failure. So, third part of last part of your not last you can say second last part, because last part is nothing but the diuretics. So you can say second last part of your drug acting on cardiovascular system, है ना. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में अपन ने क्या देखा है, वी हैव ऑलरेडी सीन द एनाटॉमी फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम फ्रॉम एचएपी पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव सीन. पहले अपने एचएपी पॉइंट ऑफ व्यू से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम देखा, उसके बाद में वी हैव सीन, उसके बाद में ड्रग वी हैव सीन द एंटी एरिथमिक ड्रग. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एचएपी पॉइंट ऑफ व्यू पहले खत्म किया, उसके बाद में आपने देखा है एंटी एरिथमिक ड्रग्स और ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक अरिथमिया. उसके बाद में आपने देखा है ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ, है ना, हाइपरटेंशन. उसके बाद में आपने देखा है ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस. एंड फॉर पर्टिकुलरली दिस इज द लास्ट पार्ट, यू कैन से सेकंड लास्ट पार्ट विल बी द डायरेटिक्स, बट मोर स्पेसिफिकली इट इज द लास्ट पार्ट डायरेटिक्स. और एक अलग चैप्टर है आपका, वो भी इसमें कंसिडर किया जाता है. तो ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर. तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज आल्सो नोन एज सीसीबी. कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज आल्सो नोन एज कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, सीसीएफ, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और सिंपली हार्ट फेलियर. simply heart failure, right? So we have already seen about this. So it is nothing but the cardiac action potential, है ना. Suppose that there is a one cell myocyte, cardiac cell is known as a myocyte. एक सेल है आपका यहाँ पे, this is the outside of the cell, this is the inside of the cell. Inside cell is a negative potential. Inside cell क्या होता है, negative potential होता है. Inside cell potential is negative. So in the cell you have negative potential, out of the cell you have positive potential. तो सेल के अंदर नेगेटिव पोटेंशियल है, सेल के बाहर क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल, राइट. तो वी हैव ऑलरेडी सीन द एक्शन पोटेंशियल ड्यूरिंग द एंटी एरिथमिक ड्रग. एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन अपन ने देखा है ऑलरेडी. इनसाइड सेल नेगेटिव पोटेंशियल इज देयर, outside cell positive potential is there, right. So inside cell is negative, means intracellular negativity is there. कार्डियक सेल में ही होता है, मसल सेल में भी होता है और आपके नर्व सेल में भी होता है. इनसाइड सेल पोटेंशियल इज नेगेटिव, राइट. तो यू कैन से कार्डियक सेल में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -90 मिलीवोल्ट. दिस इज एमवी -90
millivolt. So resting membrane potential means when cell is at a rest, cardiac cell जब rest में है तो कितना potential है उसका -90 millivolt. Now when this potential है ना during the impulse generation और impulse जब cardiac cell में receive होता है तब changes. What are the changes that takes place in the cardiac cell when impulse from SA node is transmitted to AV node and muscle of heart? What happens? So this -90 millivolt potential will decrease up to the -80 or you can say -80 and -80 to -90 resting membrane potential होता है ना due to leakage of potassium. So -90 से लेके पोटेशियम due to leakage of potassium from inside cell to outside. So from 90 millivolt to 80 millivolt comes, and here so there is a inward flow of sodium. So inward flow of sodium means here fast sodium ion channel opens and sodium goes inside the cell. So potential from -80 directly potential comes in the positive. -80 से potential directly पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव मिलीवोल्ट. क्यों? बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ सोडियम. सोडियम क्या होता है? कैटायन. कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज. तो दिस इज अ डीपोलराइजेशन. तो फेज 0 इज नोन एज अ रैपिड डीपोलराइजेशन. फेज 0 इज अ रैपिड डीपोलराइजेशन. नाउ आफ्टर फेज 0 cardiac cell will try to recover from the depolarization. So by removing potassium inside cell to the outside, यहाँ पे पोटेशियम आउटसाइड जाएगा है ना, and fast sodium ion channel will be closed. That's why there is a, and also chloride ion channel open होता है, chloride अंदर जाएगा, तो partial repolarization. So that phase 2 is known as a plateau level. Phase 2 is known as a plateau level due to continuous entry of sodium from slow sodium channel and continuous entry of calcium from L type of calcium channel, and then there is a repolarization. Repolarization मतलब क्या? Here is a removal of calcium from cell and sodium from cell. Sodium calcium remove किया जाता है cell से, entry of potassium, and finally phase 4 is a phase 4 is a again resting membrane potential. So this is the phase. Now the duration of this is known as the action potential duration, one action potential duration, right? This period is known as the effective refractory period. During this period, if there is another stimulus, no another action potential generation will be there. Now certain terms we have already seen. Automaticity means what? Is the ability of heart to undergo spontaneous diastolic depolarization. Excitability मतलब क्या? So excitability nothing but the is a response to the stimulus from the heart cell. Excitability. Contractility means the force of contraction. Action potential duration we have seen. Now absolute refractory period and relative refractory period. These definitions we have already covered in the when we were discussing about the cardiac arrhythmia, right? So absolute refractory period and relative refractory period. तो इतना जो है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, एंड दिस इज अ रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड. यहाँ तक है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, और ये जो है बाकी का रिलेटिव रिफ्रैक्टरी. तो इन द रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड इफ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस, सो एक्शन पोटेंशियल कैन स्टार्ट. ठीक है. So that's why most of the antiarrhythmic drug they increases the effective refractory period. Cardiac output is equal to stroke volume into heart rate. ये फॉर्मूला आपने देखा है. Preload means what? So preload means whatever blood in the veins, whatever venous return is. So veins से जो blood आएगा आपको venous return, that is known as a preload. So the amount of blood reaching to a heart known as a preload. Afterload means amount of blood that is a pumped out from the heart known as afterload. ठीक है. तो ये terms we have already seen. So these are the few important terms before starting the chapter you should understand, right? Now next we'll see what do you mean by heart failure. तो सबसे पहले heart failure क्या होता है? So what do you mean by heart failure? So heart failure means congestive heart failure means it is the inability of heart to pump the blood
which is required for the body, you know. So inability of heart to pump the required amount of blood in the from the heart to the body, so known as a heart failure. Now heart failure जो है आपका heart failure of different type. Heart failure or congestive cardiac failure is of different type. There are different type of heart failure. तो पहला होता है आपका लो कार्डियक आउटपुट फेल्यूर, LCO, लो कार्डियक आउटपुट फेल्यूर मीन्स इन दिस केस यहाँ पे क्या हो रहा है कि हार्ट का कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है ना, ड्यू टू डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट. यहाँ पे हार्ट का कार्डियक आउटपुट कम हो. नाउ व्हाई हार्ट फेल्यूर है ना, हार्ट फेल्यूर इज ऑफ डिफरेंट टाइप. ये हार्ट फेल्यूर है, ये सब हार्ट फेल्यूर. तो लो कार्डियक आउटपुट फेल्यूर है ना, लो कार्डियक आउटपुट फेल्यूर, राइट. तो ड्यू टू द मायोकार्डियल इस्चेमिया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन और मायोकार्डियल इस्चेमिया है ना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन और मायोकार्डियल इस्चेमिया, क्योंकि ब्लड हार्ट को कम जा रहा है. तो हियर इज अ डिक्रीज द कैपेसिटी ऑफ हार्ट है ना, डिक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो रहा है, डिक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ ड्यू टू मायोकार्डियल इन्फेक्शन और है ना, लाइक दैट मायोकार्डियल इन्फेक्शन और कोरोनरी हार्ट डिसीज है ना. तो लो आउटपुट फेल्यूर, इट इज नोन एज द लो कार्डियक आउटपुट फेल्यूर, लो कार्डियक आउटपुट फेल्यूर, लो आउटपुट फेल्यूर. और सेकंड इज है ना हाई आउटपुट फेल्यूर, हाई कार्डियक आउटपुट फेल्यूर. So low cardiac output failure or low output failure, that is because of the either myocardial infarction or coronary heart disease or thyrotoxicosis, you know, thyrotoxicosis, you know. So these are the reasons: myocardial infarction, thyrotoxicosis, and there is one more reason, you know, है ना, एक और भी reason है, thyrotoxicosis, increase the thyroid hormones, you know, because of that heart failure is there. Myocardial infarction or coronary heart disease, because of that again heart failure. So in this case a required amount of blood is not supplied to the body. जो body है उसमें जो demand है body blood का उतना amount heart pump नहीं कर पाता. In this case heart is not acting as a efficient pump, is not able to pump the required amount of blood for the body's need, right. तो low cardiac output failure, इसमें क्या है, cardiac output decrease होता है. Low cardiac output failure means decrease the cardiac output, right. Now in this case high cardiac output failure means what, high cardiac output failure means what, यहाँ पे cardiac output बढ़ा है. So here the demand of bodies blood, okay, the demand of body for the blood or oxygen. So demand of body for the oxygen or blood is increased. यहाँ पे body का demand बढ़ता है and okay, demand बढ़ता है, बड़ा है, यहाँ पे कार्डियक आउटपुट भी बड़ा है, बट कार्डियक इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट इज नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल द इंक्रीज डिमांड ऑफ योर बॉडीज, है ना. यहाँ पे कार्डियक आउटपुट बड़ा है, लेकिन द अमाउंट ऑफ ब्लड रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी इज स्टिल मोर. सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट इज नॉट एबल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ इंक्रीज डिमांड ऑफ बॉडी, नोन एज अ हाई कार्डियक आउटपुट फेल्यूर, राइट. That is due to the hypertension. Mostly ये क्यों होता है, due to the hypertension की वजह से होता है. और यहाँ पे कार्डियोमायोपैथी की वजह से, कार्डियोमायोपैथी. These are the two type of heart failure, है ना, याद रखना है. यहाँ पे मैं फिर से I will try to draw because ये मैंने ड्रॉ नहीं किया था पहले. तो हार्ट फेल्यूर, there are two type of heart failure. So one is a low output failure and one is a high output failure. So low output failure means cardiac output is here decreased. Low LOF, low output failure, cardiac output यहाँ पे कम हो चुका है ना. दूसरा होता है हाई आउटपुट फेल्यूर, लो आउटपुट फेल्यूर, दूसरा होता है हाई आउटपुट फेल्यूर.
Now low output failure is because of the myocardial infarction है ना, और thyrotoxicosis और coronary artery disease है ना, या फिर इश्केमिया है ना, इश्केमिया और मायोकार्डियल इन्फेक्शन और थायरोटॉक्सिकोसिस, ये लो आउटपुट फेल्यूर है। इसमें क्या है कि हार्ट इज नॉट एबल टू पंप द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ब्लड नीडेड फॉर द बॉडी। यहाँ पे डिमांड ब्लड का ज़्यादा है बॉडी को और हार्ट उतना सप्लाई नहीं कर पा रहा है, नॉन एज अ लो कार्डियक आउटपुट फेल्यूर। इसमें कार्डियक आउटपुट कम होता है। वो हाई आउटपुट फेल्यूर मीन्स यहाँ पे कार्डियक आउटपुट ज़्यादा है, here is increased cardiac output but which is again not able to fulfill the increased demand of bodies है ना, बॉडी का डिमांड बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे कार्डियक आउटपुट बढ़ा है, स्टिल इट इज़ नॉट इनफ टू फुलफिल द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ब्लड इन द बॉडी। यहाँ पे बॉडी का डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है, डिमांड ऑफ बॉडी इज मोर, राइट, डिमांड ऑफ बॉडी इज मोर एंड दो हियर इज हाई कार्डियक है ना, हाई आउटपुट मतलब देयर इज इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, स्टिल इट इज नॉट able to fulfill the required demand of body's blood, you know, required demand of blood for body, right? So that's why low output failure, high output failure, right? So low output failure is because of the myocardial infarction। यहाँ पे myocardial infarction या फिर myocardial ischemia या फिर coronary heart disease या फिर thyrotoxicosis, ये रीजन है ना। Now reason for high output failure is hypertension। हाइपरटेंशन, यहाँ पे एडिसन डिसीज भी है, एडिसन्स डिसीज, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, थायरोटॉक्सिकोसिस, एडिसन डिसीज, दिस आर द रीजन। नाउ हाई आउटपुट फेल्यूर का रीजन है हाइपरटेंशन एंड कार्डियोमायोपैथी है ना, कार्डियोमायोपैथी। तो लो आउटपुट फेल्यूर, हाई आउटपुट फेल्यूर, देयर आर दीज टू आउटपुट फेल्यूर। एक में कार्डियक आउटपुट कम होता है, एक में कार्डियक आउटपुट बड़ा है, स्टिल डिमांड ज़्यादा है। Again, based upon the part of heart failure is again or of two type, heart failure is of two type। तो कौन सा पार्ट यहाँ पे हार्ट का अफेक्ट हो गया, इसके बेसिस के ऊपर हार्ट फेल्यूर दो टाइप का होता है, सिस्टोलिक फेल्यूर एंड सेकंड वन इज अ डायस्टोलिक फेल्यूर। Systolic and diastolic failure. So again, heart failure are of two type depending on the anatomy or positions of heart is known. So systolic failure and diastolic failure means, in the systolic failure means, so heart is not able to pump the blood because of the during the systole required amount of blood is not pumped out। तो यहाँ पे है ना, known as the systolic failure। systolic failure में पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग यूज करते हैं, जैसे आइनोट्रोपिक ड्रग्स, डिजिटलिस वगैरह। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स दे आर यूजफुल इन द सिस्टोलिक ब्लड, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। इन केस ऑफ डायस्टोलिक हार्ट फेलियर मतलब क्या है, इन केस ऑफ डायस्टोलिक हार्ट फेलियर मीन्स व्हाट, तो हियर अगेन हियर इज अ हार्ट इज डायलेटेड ड्यू टू द हाइपरट्रॉपी ऑफ हार्ट। और हार्ट मसल क्या होता है, इसमें डायलेट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर यहाँ पे डायलेट होता है, राइट। तो यहाँ पे पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग उतने यूजफुल नहीं। तो इट इज ओवरऑल आइडिया अबाउट योर हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर ऑफ टू टाइप है ना। व्हाट इज कार्डियक फेलियर? हार्ट फेलियर इज इनएबिलिटी ऑफ हार्ट टू मेंटेन द कार्डियक आउटपुट। इनएबिलिटी ऑफ हार्ट टू मेंटेन द कार्डियक आउटपुट known as a heart failure, right? Inability of heart to maintain the cardiac output adequate to meet the metabolic demands of your body at all the time. It may be either acute heart failure or chronic heart failure। जैसे पहले मैंने दो टाइम आपको बोला है। सो हार्ट फेलियर में भी either लो आउटपुट फेलियर और हाई आउटपुट फेलियर। हार्ट फेलियर में भी either सिस्टोलिक फेलियर और डायस्टोलिक फेलियर, और इट में भी either acute heart failure और chronic heart failure, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, तो फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन ना। कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कार्डियक मसल इज नथिंग बट द मायोसाइट। तो मायोकार्डियम का स्ट्रक्चरल यूनिट कौन है? मायोसाइट। इट इज अ सार्कोमर विद अल्टरनेटिव डार्क लाइट बैंड मेड अप ऑफ टू मायोफिलामेंट है ना।
तो मायोसाइट में क्या है कि दो मायोफिलामेंट है, मायोफिलामेंट मतलब मसल फाइबर है. देयर इज वन नोन एज एक्टिन व्हिच इज अ थिन मसल फाइबर एंड मायोसिन व्हिच इज अ थिक मसल फाइबर, राइट. तो व्हाट हैपेंस, तो मायोसिन जो है, मायोसिन तो व्हिच इज अ थिक मसल फाइबर, so it has an intrinsic enzymatic activity. It has a one enzyme known as ATPase, है ना. Whereas actin, myosin has a ATPase activity, whereas actin has a ability to combine reversibly with the myosin in presence of ATPase and calcium. Right? Now, calcium activate the myosin ATPase. Calcium क्या करता है, जब inside calcium जाता है, calcium activate the myosin ATPase which break down the ATP and this is the energy used for the excitation, conduction, coupling of cardiacs. Now inotropic action क्या होता है, inotropic action on heart is because of the increased intracytoplasmic calcium, cardiac contraction and relaxation as a result of changing the concentration of calcium in the myocardial cytosol. कैसे होता है अपन बोलता हूँ मैं आपको डायग्रामेटिक वे से बोल. कार्डियक आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज पंप्ड आउट पर यूनिट टाइम अराउंड 5 लीटर, है ना. कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, है ना. कार्डियक आउटपुट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट. ये फॉर्मूला आपको नहीं देखा है. कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम या स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट. कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट. तो कार्डियक आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय, ये कौन डिसाइड करता है कार्डियक आउटपुट, प्रीलोड. प्रीलोड मतलब क्या है, वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर. वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर मतलब वेंट्रिकल में कितना ब्लड है बिफोर द सिस्टोल ऑकर्स, वो कौन सा ब्लड रहेगा, जितना ब्लड हार्ट में आएगा उतना रहेगा. तो प्रीलोड मीन्स it is a ventricular end diastolic pressure. Okay? Cardiac output is determined by preload, myocardial contractility, the force of myocardial contraction, and afterload. Afterload क्या है, ventricular tension during ejection. तो ventricles में blood सिस्टोल के टाइम पे आफ्टर सिस्टोल कितना प्रेशर है ना. So ventricular tension during ejection of blood. So cardiac output is measured by preload, myocardial contractility, and afterload. है ना. प्रीलोड ज्यादा है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, है ना. मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा. प्रीलोड कम है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, राइट, लाइक दैट, राइट. व्हेन मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज इम्पेयर्ड, जब मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी इम्पेयर हो गया या फिर कम हो गया, व्हेन मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज इम्पेयर्ड एंड वेंट्रिकल, है ना, एंड वेंट्रिकल डायलेट्स. मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम है ना. मान लीजिए आपको हार्ट में ब्लड जो आ रहा है वो ज़्यादा है और मायोकार्डियम उतना फोर्सफुली पंप नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, मोर ब्लड विल बी एक्यूमुलेटेड इन द मायोकार्डियम. तो मायोकार्डियल मसल क्या हो गए, वीक हो गए. क्यों वीक हो गए, इधर वो वहाँ पे मस्कुलर कोई मसल का इशू है आपको, या फिर एजिंग है, एजिंग प्रोसेस के कारण भी होता है, and also because of the myocardial infection, myocardial ischemia, congestive cardiac, myocardial ischemia, coronary artery disease, right? Thyrotoxicosis, एडिसन डिसीज, है ना. ज्यादा ब्लड वॉल्यूम हो गया तो एडिसन डिसीज में. when myocardial contractility is decreased or impaired, more blood comes in the heart and ventricles dilate, ventricle का साइज बढ़ जाता है. after load increases and cardiac output decreases, cardiac output diminishes मतलब decrease होता है. so basically in the heart failure cardiac output is decreased. क्या होता है, हार्ट फेलियर में कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है. रिजल्टेंट न्यूरोनल एंड हार्मोनल स्टिमुलाई, भी कार्डियक आउटपुट कम हो गया तो बॉडी विल ट्राई टू मेंटेन इट, है ना. हार्ट आपका हार्ट फेल हो रहा है ना, कार्डियक फेल हो रहा है, there is a decreased cardiac output. so decreased cardiac output, against that आपकी body will try to increase it. so as there is a
decreased cardiac output in the heart failure, congestive cardiac failure. कंजेस्टिव को बोलते हैं, अपन बोलेंगे बाद में कंजेस्टिव को बोलते हैं. तो in the heart failure, decreased cardiac output is there, है ना. To increase that cardiac output, your body will has a compensatory mechanism. आपके बॉडी में compensatory mechanism होते हैं वो cardiac output बढ़ाने के लिए for short term. Your body will try to increase it by neuronal and hormonal stimuli. मतलब क्या है? So it will increase the sympathetic outflow. तो noradrenaline release कर देगा. Noradrenaline will come to the heart. It will stimulate heart. Heart rate will increase and force of contraction will increase for short term. By acting on alpha receptor, it will increase the peripheral resistance. है ना. So the resultant neuronal and hormonal stimuli following the decreased cardiac output, है ना, मतलब नॉरएड्रेनालिन जो रिलीज हो रहा है वो फिर से हार्ट को स्टिमुलेट करेगा, हार्ट का हार्ट रेट बढ़ाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा. बट यहाँ पे मायोकार्डियल मसल खराब होने के कारण क्या होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता ही नहीं, कार्डियक आउटपुट नहीं बढ़ता. तो इन टर्न्स विल कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज आफ्टर लोड, है ना. क्यों? मतलब हार्ट रेट बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है, लेकिन पंप नहीं हो रहा है ब्लड. क्यों? मायोकार्डियम खराब है ना. एंड अगेन बाय acting on alpha receptor increases the preload after load. So as there is a decrease in the cardiac output, है ना, तो okay, decrease in the cardiac output in a failing heart, so resultant neuronal and hormonal stimuli will again contribute to increase the load on your heart. Now this reduces the cardiac output further. More cardiac output is decreased while इंक्रीजिंग द मायोकार्डियल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट. तो हार्ट का काम तो बढ़ रहा है, तो उसका काम बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन तो ज़्यादा लगेगा. ऑक्सीजन डिमांड इज इंक्रीजिंग बट कार्डियक आउटपुट इज नॉट सफिशिएंट. कार्डियक आउटपुट इज डिक्रीजिंग. दिस विल एस्टेब्लिश अ विशियस साइकिल, है ना. मतलब क्या कि इमेजिन करो कि बहुत ज़्यादा ब्लड आपके वेंस से हार्ट में आ रहा है, हार्ट में बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है, प्रीलोड ज़्यादा है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कैपेसिटी जो है वो कम हो चुका है, मतलब पंपिंग कैपेसिटी ड्यू टू मायोकार्डियल मसल डीजनरेशन या फिर मायोकार्डियल मस्कुलर एट्रोफी, है ना, या फिर ड्यू टू मायोकार्डियल इन्फेक्शन इश्यूमिया, राइट. तो हार्ट में ब्लड ज़्यादा आ रहा है, हार्ट उतना पंप नहीं कर पा रहा है, तो हार्ट के वेंट्रिकल में ब्लड जमा हो रहा है. हार्ट के वेंट्रिकल में ब्लड ज़्यादा हो रहा है, मान लीजिए 100 ml है, उसमें का, है ना, उसमें का सिर्फ 30 ml 40 ml ही पंप कर पा रहा है, बाकी का 60 ml वैसे ही रह रहा है. लेकिन आ तो सभी रहे ना, आने का इनटेक कितना 100 ml, आउटपुट कितना जा रहा है 30 ml, तो बचा जो 70 है और आने वाला जो 100 है वो जमा हो जाता है हार्ट में, एंड दैट डायलेट्स द वेंट्रिकल नोन एज वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, राइट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनपुट इज मोर, आउटपुट इज लेस, है ना. एंड टू इंक्रीज द आउटपुट योर बॉडी इज अगेन ट्राइंग टू स्टिमुलेट द हार्ट, है ना. हार्ट को स्टिमुलेट कर रहा है तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करने का ट्राई कर रहा है, हार्ट रेट बढ़ रहा है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं बढ़ रहा है, हार्ट रेट बढ़ रहा है ना, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ने का ट्राई कर रहा है, लेकिन आउटपुट नहीं बढ़ रहा है, कार्डियक आउटपुट. तो यहाँ पे क्या है, सो हार्ट इज वर्किंग more, it is working more and more because of the sympathetic stimulation, but output is not there, right. So as it is working, it require more oxygen, so it require more oxygen. So that's how, है ना, ब्लड ज़्यादा आ रहा है हार्ट में, हार्ट से बाहर कम जा रहा है और हार्ट का साइज बढ़ रहा है ना. as okay, and there is a accumulation of more blood in the lungs also. There is accumulation of blood in the lungs known as a है ना, pulmonary edema, right. Now in this case what we have to, heart failure may be because of the, है ना, heart failure क्यों होता है, may be because of the, है ना, particularly low output failure, जैसे मैंने बोला था, low output failure,
मीन्स देयर इज अ डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट एज पर द नीड. बॉडी को ब्लड लग रहा है लेकिन हार्ट पंप नहीं कर पाया, नोन एज अ लो आउटपुट फेलियर. दैट इज बिकॉज ऑफ द सीवियर एनीमिया, क्योंकि ब्लड जा रहा है लेकिन एनीमिया है तो ऑक्सीजन उतना जाएगा नहीं. सो लो आउटपुट फेलियर इज बिकॉज ऑफ द एनीमिया, thyrotoxicosis, increased thyroid hormone, and then vitamin B6 deficiency, or myocardial ischemia or myocardial infection, right? So known as a low output failure, right? And there is another one, जैसे मैंने बोला है ना, another one is there, लो आउटपुट फेलियर होता है, एक होता है हाई आउटपुट फेलियर. हाई आउटपुट फेलियर. इन अ लो आउटपुट फेलियर कार्डियक आउटपुट इज डिक्रीज. कार्डियक आउटपुट क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है. कार्डियक आउटपुट इज डिक्रीज्ड. इन अ लो आउटपुट फेलियर कार्डियक आउटपुट इज डिक्रीज्ड, right? Cardiac output is decreased, and that's why the required demand is more and supply is less. Cardiac output is not sufficient to supply the demand of body due to either anemia, thyrotoxicosis, vitamin B6 deficiency, myocardial infection or myocardial ischemia. ठीक है, known as a low output failure. इसमें क्या है कि इसमें पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग, मतलब कार्डियोटोनिक ड्रग जो है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग और कार्डियोटोनिक ड्रग्स दे आर इफेक्टिव, है ना. पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग दे आर इफेक्टिव, डिगोक्सिन वगैरह. नाउ हाई आउटपुट फेलियर मतलब क्या है? तो हियर इट इज बिकॉज ऑफ द, ये क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द हाइपरटेंशन. लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन अगर आपको है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है लॉन्ग टर्म में, तो दैट रिजल्ट इन द हाई आउटपुट फेलियर. हाई आउटपुट फेलियर, hypertension, right? Then cardiomyopathy due to the dilated cardiomyopathy, ventricular dilation, है ना, ventricle dilate हो गए तो because of that also. These are the reason for high output failure. In this case cardiac output क्या होता है? Cardiac output is more. In this case cardiac output is increased. In this case cardiac output is increased. But still your body's demand is also increased, and this increased cardiac output is still not sufficient to fulfill the body's required demand. That's why known as a high output failure. So output failure, heart failure may be either low output failure or high output failure. Clear? ठीक है. Now anatomically either it may be systolic failure or diastolic failure. Now द मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन को हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स फॉर द कार्डियक आउटपुट मेजरमेंट. मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स फॉर द कार्डियक आउटपुट डिटर्मिनेशन इज अ लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन, LVEF. लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन मीन्स व्हाट? दिस इज द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज बीइंग पंप्ड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना. इट इज द amount of blood which is being pumped from left ventricle. So most sensitive cardiac output determinant is nothing but the left ventricular ejection fraction. Normal left ventricular ejection fraction होता है आपका 67 to 80%. Okay. Now in case of heart failure ये कम हो जाता है. So this ventricular ejection fraction is decreased in the heart failure. Say for example 40%. अगर आपका हार्ट, if your left ventricular ejection fraction is only 40%, it means your heart is failing, है ना. मतलब अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट मेजर कौन करता है? यही मेजर करता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन. तो if your left ventricular ejection fraction is less than, है ना, systolic heart failure means what? If your left ventricular ejection fraction is less than 40%, if LVEF, left ventricular ejection fraction is less than 40%, known as a systolic heart failure. In case of severe heart failure, so left ventricular ejection fraction is only 20%, है ना. 40% से कम हो गया तो systolic heart failure, और बहुत ज़्यादा हार्ट फेलियर है, सीवियर हार्ट फेलियर, उसमें 20% होता है. Now pathophysiology of congestive heart failure.
तो कंजेस्टिव क्यों बोल रहे हैं कि हार्ट में ब्लड ज़्यादा आ रहा है ना, हार्ट में ब्लड ज़्यादा आ रहा है, हार्ट उतना सफिशिएंट पंप नहीं कर पा रहा है, पंप नहीं कर पा रहा है, राइट। तो बॉडी का डिमांड नहीं फुलफिल हो रहा है, लेकिन हार्ट में ज़्यादा आ रहा है, हार्ट में ज़्यादा आ रहा है तो लंग्स में भी ज़्यादा जाएगा, लंग्स में ज़्यादा जा रहा है तो वहाँ पे इडीमा हो जाएगा, देयर इज अ पल्मोनरी इडीमा, है ना, कंजेशन लाइक सिम्टम्स ऑफ कंजेशन हो रहा है ना ब्लड का, कंजेशन कहाँ पे हो रहा है, हार्ट में ही ब्लड जमा हो रहा है, हार्ट से बाहर नहीं निकल रहा है ब्लड, दैट्स वाई कंजेशन, एंड दैट्स वाई हार्ट का जो साइज है वो बढ़ता है ना, वहाँ पे वेंट्रिकल का साइज बढ़ता है ना, तो कंजेशन हो रहा है ना वहाँ पे, दैट्स वाई कंजेस्टिव, हार्ट में हो रहा है इसलिए कार्डियक फेलियर, क्यों, फेलियर टू पंप द ब्लड, दैट्स वाई कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ये टर्मिनोलॉजीज ही इंपॉर्टेंट होता है। तो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, so failing heart is characterized by inability to provide a sufficient cardiac output for the body's metabolic need, inability to provide a sufficient cardiac output for the body's metabolic need. Heart failure is nothing but the failure of heart to pump the blood, failure of heart to pump the blood mostly from left ventricle. Now ये क्यों होता है, there are different reasons, जैसे because of the pressure overload है ना, प्रेशर ओवरलोड, बिकॉज ऑफ द प्रेशर ओवरलोड, जैसे अगर आपको हाइपरटेंशन है तो इन केस ऑफ हाइपरटेंशन जैसे एक कॉज है हाई आउटपुट फेलियर का, कॉज क्या है, हाइपरटेंशन स्टेनोसिस ऑफ कार्डियक वॉल्व, कार्डियक आपका वॉल्व जो है ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड उसका स्टेनोसिस हो गया, उसका इशू हो गया, तो देन वॉल्यूम ओवरलोड, अगर ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया आपका, वॉल्यूम ओवरलोड है ना, वॉल्यूम ओवरलोड इज वन ऑफ द रीजन। वॉल्यूम ओवरलोड कब होता है, इन केस ऑफ एडिशन डिसीज, है ना, आपके किडनी में ब्लड ज़्यादा फिल्टर नहीं हो रहा है, वही है ना, तो एडिशन डिसीज, इन केस ऑफ कंजेनाइटल ओवरलोड, वॉल्यूम ओवरलोड इन केस ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिसीज और recurrent lesions in the mitral wall or aortic wall, then loss of cardiac muscle, मायोकार्डियम का मसल लॉस हो गया, क्यों हो गया, ड्यू टू इन्फेक्शन और इस्चेमिक हार्ट डिसीज, इस्चेमिक हार्ट डैमेज, मायोकार्डियल मसल हो गया, इसके कारण भी हार्ट फेलियर होता है। तो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के रीजन देखो, प्रेशर ओवरलोड, वॉल्यूम ओवरलोड, डिक्रीज लॉस ऑफ कार्डियक मसल, डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ मायोकार्डियम, मायोकार्डियम का इन्फेक्शन हो गया, मायोकार्डियम का कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगा, राइट। देन रेस्ट्रिक्टेड कार्डियक फीलिंग मतलब as in a constructive pericarditism, diastolic heart failure, so है ना, so ultimately क्या हो रहा है कि ultimately there is a decreased cardiac output, ultimately because of these reasons, what is there, all these reasons will decrease the cardiac output decrease होगा, मतलब क्या, तो not है ना, record amount of blood is not sent to your body's demand, बॉडी में जितना ब्लड जाना चाहिए उतना नहीं जा रहा है, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है ना, मान लीजिए कार्डियक आउटपुट नॉर्मल कितना है, जैसे 45 to 55 लीटर है ना, तो वो कम हो रहा है, सो मोर देन वो कम हो रहा है, मान लीजिए 20 लीटर हो रहा है, सो कार्डियक आउटपुट इज डिक्रीज। नाउ इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट योर बॉडी विल ट्राई टू इंक्रीज इट, तो उसको बोलते हैं कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म फॉर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सो इंक्रीज्ड है ना, decrease the cardiac output leads to stimulation of compensatory mechanism। compensatory mechanism क्या है, बारो रिसेप्टर है ना, या फिर आपका ब्रेन से सिंपैथेटिक आउटफ्लो बढ़ेगा, तो नॉर एड्रेनालिन रिलीज होगा, राइट, तो सिंपैथेटिक आउटफ्लो बढ़ेगा तो नॉर एड्रेनालिन रिलीज होगा, राइट। सो इंक्रीज इन द डायस्टोल, इंक्रीज इन द डायस्टोलिक टेंशन नोन एज द प्रीलोड, देन एक्टिवेशन ऑफ एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम, तो यहाँ पे नॉर एड्रेनालिन रिलीज होगा, नॉर एड्रेनालिन विल बी रिलीज्ड, नॉर एड्रेनालिन will act on a alpha 1 receptor, will increase the preload again, okay, noradrenaline will act on a beta 1 receptor, will stimulate the heart, है ना, will stimulate the heart, increase the heart rate, right? And force of contraction, but muscle खराब होने के कारण force of contraction is useless, so it increases the work of heart, है ना, work of heart, and also by acting on a beta 1 receptor in the kidney it activates the RAS,
सो रास एक्टिवेट होने के कारण क्या होता है, मोर पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ता है एंड मोर ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है ना, पर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ पे पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, हार्ट ज़्यादा बीट कर रहा है ना, ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है, बट कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है. Because of that, there is a congestion in the heart, in the lungs, known as the congestive cardiac failure, right? Known as the congestive cardiac failure, right? Now, what are the treatment strategy for OAL? Strategy क्या होना चाहिए? Treatment strategy. So, treatment strategy is nothing but this. So, acute heart failure. Acute heart failure जो होता है, acute heart failure is recognized by decrease the contractility of your heart. कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो गया तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा, कम होगा. तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो गया तो कार्डियक आउटपुट कम होगा. डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट. तो डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट in response to that, your body will start compensatory mechanism. Body will start compensatory mechanism to remold the heart, है ना. तो क्या होगा, there is increase the sympathetic activity इंक्रीज होगा, नॉर एड्रेनालिन रिलीज होगा. नॉर एड्रेनालिन यहाँ पे लिखता हूँ, नॉर एड्रेनालिन. नॉर एड्रेनालिन, what it will do, it will stimulate the alpha 1 receptor, so which will cause vasoconstriction. Vasoconstriction leads to increase in the preload. Now artery और contraction है ना, arteries को भी contract करेगा, veins को भी करेगा. तो vasoconstriction leads to increase preload, arterial contraction leads to increase the upper load. Okay. Again, noradrenaline by acting on a beta 1 receptor, what will it do? It will increase the heart rate and force of contraction. Will try to maintain a cardiac output, required cardiac output, but only for short time. You know. Then by acting on a beta 1 receptor of kidney, what will it activate the renin, angiotensin, aldosterone system. वहाँ पे क्या होगा, angiotensin gene is converted into angiotensin 1, 1 is converted into 2, and 2 will act on its receptor, you know, which will cause vasoconstriction. That means it increases the preload and afterload again, workload on heart, you know, and also activate the aldosterone. Aldosterone को activate कर देगा, क्या होगा, salt and water retention, है ना. किडनी में salt and water retain होगा, यूरिन फॉर्म नहीं होगा ज़्यादा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा. ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया तो फिर से ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, है ना. तो मोर ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया तो अगेन प्रीलोड बढ़ गया, तो मोर ब्लड विल कम टू द हार्ट. ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया तो ज़्यादा ब्लड हार्ट में आएगा, तो ज़्यादा ब्लड हार्ट में आएगा, लेकिन कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो चुका है, तो वहाँ पे ब्लड ज़्यादा जमा हो जाएगा आपके हार्ट में, वहाँ पे वेंट्रिकुलर डायलेशन मतलब रीमॉडलिंग ऑफ योर हार्ट, एंड फाइनली हार्ट का मसल का डेथ हो जाएगा. This is how congestive cardiac failure is there. Now, different drugs used in the congestive heart failure. तो congestive heart failure में drugs कौन से यूज करना है? Good night लो. So you can use alpha blockers. Alpha blockers will decrease the preload and afterload. जैसे preload will be decreased by nitrates and hydralazine will decrease the afterload. ठीक है? You can use beta blockers. तो beta blockers use करेंगे. So beta blockers will block the beta 1 mediated actions on a heart and kidney. ये दो actions आपके beta 1 blocker block करेंगे. So you can also use ACE inhibitors. ACE inhibitors will prevent the again formation of angiotensin second and other remaining. Or you can use the angiotensin converting receptor blocker, है ना, 81 blocker, है ना. And finally you can also use the aldosterone antagonist, spironolactone and eplerenone, that will prevent the sodium water retention and increase in the blood volume. अगर ये नहीं कर सकते तो you can use diuretics to decrease the blood volume. Right? So these are the different drugs, they are used in the heart failure. ठीक है. So I hope you might have understood here. ठीक है. तो आप देखेंगे drugs, right? तो सेम चीज यहाँ पे डायग्रामेटिक वे में लिखा है ना. Reduced cardiac output means heart is failing. Right? Reduced cardiac output, heart is failing. So against that,
सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इज इंक्रीज्ड, तो बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेशन ना, यहाँ पे कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, कार्डियक आउटपुट कम हो गया है, कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म बॉडी में चालू हो जा रहा है, तो डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट लीड्स टू स्टिमुलेशन ऑफ sympathetic nervous system, so release of noradrenaline, it will increase the heart rate, heart rate, force of contraction, and alpha receptor group, it will increase the peripheral resistance, but myocardial muscle is not there, so that's why heart rate increase हो रहा है, myocardium का काम बढ़ रहा है, but वहाँ पे उसका आउटपुट नहीं बढ़ रहा है, right? So because of that there is increased oxygen demand to the heart, also activation of RAS, ये सब understand हो गया. This is one of the compensatory mechanism, right? So compensatory mechanism, so you can use either here vasodilator, diuretics, like जैसे अपने पहले स्लाइड में देखा है, इस स्लाइड में same thing is explained over here, so I don't think it is required now. Now drug used in the cardiac congestive cardiac failure, तो पहला है आपका, है ना, ACE inhibitors and vasodilators, है ना, ACE inhibitor, angiotensin converting enzyme inhibitor, and vasodilators. So vasodilators are used in the CHF to decrease the afterload load, which is produced in response to the activation of neurohumoral mechanism. तो arteries को dilate करने वाला कौन है? Arterial dilator hydrolysin. वेन को डायलेट करने वाला कौन है? नाइट्रेट्स. बोथ आर्टेरियल प्लस वेनोडाइलेटर कौन है? नाइट्रोपोसाइड, देन अल्फा ब्लॉकर प्राजोसिन, एस इनहिबिटर्स जो है, एंड आपके एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो है, सो ऑल दे आर द आर्टेरियो प्लस वेनोडाइलेटर. दे कंट्रोल द हाइपरटेंशन, है ना, दे विल कंट्रोल द हाइपरटेंशन एंड व्हिच इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. दे विल इंक्रीज द सर्वाइवल टाइम ऑफ द पेशेंट, reduces the clinical progress of the disease, the clinical progress of CHF. ACE inhibitors जो है, angiotensin converting enzyme inhibitor, they are used to treat the patient with a symptomatic CHF, symptomatic congestive heart failure, okay, with a less systolic left ventricular in effective failure. In the management of acute congestive heart failure, also in a myocardial infection, so ACE inhibitors are the therapy of choice, you know, therapy of choice, infusion of sodium nitroprusside or nitroglycerin. Then vasopeptidase inhibitors, बहुत important है vasopeptidase inhibitor. Vasopeptidase inhibitor, vasopeptidase is an enzyme. Vasopeptidase is an enzyme that will metabolize. ये किसको metabolize करता है? It will act like a, है ना, it will angiotensin converting enzyme उसको भी metabolize करता है, angiotensin converting enzyme like action है उसका, and दूसरा एक होता है it will also metabolize the, है ना, vasopeptidase enzyme found in the renal tubules, lungs, intestine, heart and blood vessel. तो काम क्या है इसका? तो सबसे पहले जैसे angiotensin converting enzyme है उसके जैसा भी इसका काम है, एंड दूसरा है ना, सो फर्स्ट इट विल कन्वर्ट लाइक एंजियोटेंसिन, मतलब इट्स, है ना, तो वेसोपेप्टिडेज का काम क्या है कि एस जो एंजाइम है, एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, तो पहला तो काम है एस के जैसा, जो भी एस करेगा वो ही वेसोपेप्टिडेज करेगा. तो एट वन हैंड एंड एट अनदर हैंड इट विल ब्रेक डाउन दिस, इट विल आल्सो मेटाबोलाइज दिस एट्रियल नाइट्रोटिक पेप्टाइड एएनपी एंड बीएनपी, ANP and BNP. ANP क्या है? एट्रियल नाइट्रोटिक पेप्टाइड, है ना. तो वैसोपेप्टिडेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैसोपेप्टिडेज इनहिबिटर, ये समझ लो आप, व्हाई वैसोपेप्टिडेज इनहिबिटर्स आर यूज्ड इन द कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर. वैसोपेप्टिडेज इनहिबिटर, this enzyme present in the kidney, right, renal tubule, lungs, intestine, brain, heart and blood vessels. So it will act like ACE. पहले तो एक इसका काम है एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है उसके जैसा इसका एक काम है, तो इट विल वर्क एज अ एस टू कन्वर्ट एंजियोटेंसिन टू एंजियोटेंसिन 1 2 3 लाइक दैट. एंड second function of this vasopeaptidase enzyme is
ब्रेकडाउन और मेटाबॉलिज्म ऑफ एट्रियल नाइट्रोटिक पेप्टाइड ANP। दूसरा एक होता है BNP, ब्रेन डिराइव्ड नाइट्रोटिक पेप्टाइड प्रोड्यूस्ड बाय वेंट्रिकल्स, आपने ऑलरेडी देखा है। तो ANP एंड BNP देयर आर टू, है ना, दो होता है यहाँ पे, BNP एंड BNP यहाँ पे ब्रेन डिराइव्ड, है ना, natriuretic peptide. So it will break down the ANP and BNP. So ANP means atrial natriuretic peptide. Atria जो है वो बनता है ना, in response to, है ना, in response to decrease the blood pressure. And some other peptide hormone including bradykinin. Inhibition of this vasopeptidase results in the inhibition of this vasopeptidase results in the, इसको इनिबिट करेंगे तो vasodilation होता है and there is a sodium excretion प्रोडक्शन प्रोडक्टिंग ANP, वैसोडाइलेशन होता है एंड सोडियम का एक्सक्रीशन होता है एंड एट्रियल नाइट्रोटिक पेप्टाइड का प्रोडक्शन होता है। नाउ देयर इज वन ड्रग नोन एज ओमाप्रिलेट एंड इनाप्टिलेट। ओमाप्रिलेट, इनाप्टिलेट, they are known as a vasopeptidase inhibitor. They can cause arterial and venous dilation and natriuresis. They are used. एक और एक ड्रग है नेसिलिटाइड। नेसिलिटाइड इज a recombinant type of B natriuretic peptide, BNP, है ना, इसका recombinant ड्रग है ये BNP का, नेसिलिटाइड। Okay, by combining with the receptor on a vascular smooth muscle endothelial cell causes arterial and venous dilation and natriuresis. मतलब ये आर्टरीज को, वेन्स को डायलेट भी करता है और डायूरेसिस भी करता है, ड्यूअल एक्शन है इसका। तो वैसोपेप्टिडेज इनहिबिटर, राइट। नाउ थर्ड इज अ डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स मतलब क्या? ये डायूरेटिक्स मतलब ब्लड वॉल्यूम कम करने वाले। तो इसमें क्या है, इसमें लूप डायूरेटिक्स यूज करते हैं। लूप डायूरेटिक्स मतलब वैसे फॉर एग्जाम्पल फ्यूरासेमाइड, थायाजाइड, है ना, ब्यूमेटिनाइड, लूप डायूरेटिक्स आर यूज्ड। तो दे रिलीव द सोडियम एंड वाटर रिटेंशन एंड thus reduces the edema जो बड़ा है वो कम करेंगे, तो पल्मोनरी कंजेशन कम करते हैं। दे डू नॉट एज सच, है ना, दे विल नॉट इम्प्रूव द कार्डियक आउटपुट, दे विल नॉट इम्प्रूव द कार्डियक आउटपुट, ये कार्डियक आउटपुट इंक्रीज नहीं करते, बट दे विल डिक्रीज द edema, है ना, दे विल डिक्रीज द edema। एज सच दे विल नॉट इम्प्रूव द वेंट्रिकुलर फंक्शन, दे हैव नो प्लेस इन एब्सेंस ऑफ सिम्पटम्स एंड साइंस ऑफ कंजेशन। जहाँ पे कंजेशन नहीं है, edema नहीं है, उसमें यूज नहीं करना है। Diuretic of choice are loop diuretic like furosemide, bumetanide. Spironolactone is the only drug which decreases the mortality in the patient with congestive heart failure. So diuretics they will not decrease the mortality, है ना, डेथ रेट कम नहीं करेंगे डायरेटिक्स, बट spironolactone can decrease the death rate in this nature. Aldosterone antagonist, इसमें वही aldosterone antagonist मतलब क्या, spironolactone। दूसरा होता है iprelenone, spironolactone, iprelenone. So in addition to mineralocorticoid properties, aldosterone causes the coronary and renovascular remodeling. Coronary artery and renal artery का remodeling करता है। Endothelial cells and their receptor dysfunction. Spironolactone is used in the combination with ACE inhibitor. Spironolactone भी यूज कर सकते हैं, iprelenone भी यूज कर सकते हैं। Beta blockers, their use in the large doses to begin therapy with which can worsen the condition. However, gradually increasing dose of metoprolol carvedilol can be used in the to improve the symptoms. Initially beta blockers का use उसमें congestive cardiac failure में नहीं करते थे, but later on they are found effective because blockage of beta receptor in the kidney can prevent the action of aldosterone and all that. That's why. और phosphodiesterase 3 inhibitors के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत बार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। phosphodiesterase 3 inhibitor, इसमें ड्रग आता है amrinone, milrinone, they are the selective phosphodiesterase 3 inhibitor, PDE3 inhibitor. Now phosphodiesterase enzyme का क्या काम है? Phosphodiesterase enzyme is a specific enzyme for intracellular degradation of cyclic AMP in the heart blood vessels and bronchial sphincter. It decreases the myocardial cyclic AMP and calcium influx. तो ये है ना, हार्ट रेट कम करने में मदद करता है। amrinone, milrinone,
है ना, रिनामरिनोन, और एक ड्रग है अमरिनोन, मिलीरिनोन, रिनामरिनोन। तो रिनोन्स आर फॉस्फोडाइस्ट्रेट 3 मीटर, फॉस्फोडाइस्ट्रेट 5 मीटर कौन है, पिल्स, सिल्डेनाफिल, टेडेलाफिल, है ना, वो जो है इलेक्ट्राइल डिसफंक्शन वाले, वो फॉस्फोडाइस्ट्रेट 5 इनहिबिटर है। फॉस्फोडाइस्ट्रेट 3 मीटर, अमरिनोन, मिलीरिनोन, रिनामरिनोन। तो उसका एडवर्स रिएक्शन है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइट बढ़ देगा, कम कर देगा, नौसिया, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, लिवर डैमेज, अरिथमिया। मोस्ट, है ना, कॉमनली यूज्ड फॉर मेंटेनेंस थेरेपी ऑफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, है ना, अमरिनोन हो गए। 8:30 बजे तक लेंगे अपन, डोंट वरी। मैकेनिज्म ऑफ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग, है ना, कार्डियो, इसमें क्या है कि आइनोट्रोपिक ड्रग, है ना, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग। तो एग्जांपल क्या रहेंगे उसके पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग के, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, डिजिटलिस, मतलब क्या, डिजिटोक्सिन, डिगोक्सिन। दूसरा होता है डोपामाइन, होता है डोपामाइन, है ना, डोपामाइन एंड आइसोप्रोनेलिन। तो these are known as the inotropic drug which will increase the force of contraction of heart muscle. तो mechanism of positive inotropic action of cardiac glycoside, cardiac glycoside कैसे एक्ट करते देखो, दिस इज नोन एज द हार्ट मसल, ये क्या है, मायोकार्डियम, इज अ मायोसाइट, मायोसाइट है ये। नाउ on the myocyte, on the membrane of myocyte you have different ion channels, you have this sodium potassium ATPase which is also known as the digoxine or digoxine receptor, क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर। सोडियम एटीपेज, सोडियम पोटेशियम एटीपेज इज आल्सो नोन एज डिजिटोक्सिन रिसेप्टर, ये क्या है, डिजिटोक्सिन रिसेप्टर। then this one is known as the sodium calcium exchange pump, sodium calcium exchange pump, this is known as a calcium channel, L type of calcium channel, right? दूसरा होता है कैल्शियम एटीपेज पंप, right? ये पंप होता है। नाउ व्हाट हैपेंस इन द कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या होता है, नाउ सोडियम पोटेशियम एटीपेज, जब सोडियम अंदर जाता है ना, जब नॉर्मली सोडियम अंदर जाता है डीपोलराइजेशन होता है, when sodium comes inside there is a depolarization, and this sodium depolarization this is exchanged with the calcium, ये सोडियम जब यहाँ पे सोडियम बाहर जाएगा, कैल्शियम अंदर आएगा नॉर्मली, उसके बाद में कैल्शियम अंदर आता है, कैल्शियम अंदर आता है तो मोर कैल्शियम रिलीज होता है, एंड कैल्शियम रिलीज होने के बाद में दैट कैल्शियम विल इंटरेक्ट विद द ट्रोपोनिन and myosin filament, there is a contraction of heart, now, yeah. Now abhi what digoxin will do, so digoxin is known as sodium potassium ATPase blocker, so it inhibit the pump, sodium potassium ATPase pump। तो इसका काम क्या है कि जो सोडियम अंदर है उसको बाहर निकालना एंड पोटेशियम को अंदर लेके आना, दैट इज द रोल ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। तो इंट्रासेलुलर डीपोलराइजेशन के लिए सोडियम अंदर गया था फिर जीरो में, उसको बाहर निकलने का काम किसका है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप का, और दिस इज इनहिबिटेड बाय डिगोक्सिन। ये इनहिबिट हो गया तो मोर सोडियम विल बी अकुमुलेटेड इन द मायोसाइट, जहाँ सोडियम अंदर अकुमुलेट होता है, एंड दैट इनहिबिट द सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज पंप। इसका काम क्या है कि इनसाइड सेल में जो कैल्शियम है उसको बाहर निकालना, इनसाइड सेल में कैल्शियम जो है वो बाहर निकालना, तो राइट, तो देयर इज accumulation ऑफ कैल्शियम इनसाइड द सेल, कैल्शियम यहाँ पे रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, एंड कैल्शियम विल कम थ्रू अगेन एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल, तो और ज़्यादा कैल्शियम अंदर आएगा, दिस कैल्शियम इंक्रीज्ड कैल्शियम, बहुत सारा ये जो कैल्शियम है ये कहाँ पे जाएगा, दिस कैल्शियम विल बी स्टोर्ड इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम स्टोर हो जाएगा,
मतलब यहाँ पे है ना, तो ये कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर हो जाएगा, राइट। तो जब नेक्स्ट सिग्नल आएगा व्हेन देयर इज इम्पल्स, तो ये टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल जब एक्टिव होंगे, फिर से कैल्शियम अंदर आएगा, तो देयर इज अ रिलीज ऑफ ह्यूज कैल्शियम, देयर इज रिलीज ऑफ ह्यूज कैल्शियम थ्रू दिस, एंड दे okay, so increased intracellular calcium will interact more strongly with the muscles of myocardium and there is a forceful contraction, यहाँ पे forceful contraction होगा तो cardiac output बढ़ता है. That's how this digoxine will work. तो digoxine क्या करता है? It inhibits the sodium potassium ATPase pump. Digoxine inhibits the sodium potassium ATPase pump. Because of the inhibition of sodium potassium ATPase pump, so sodium will remain inside. Sodium will remain inside. Sodium accumulate inside, and when the more sodium accumulate inside, so calcium cannot be exchanged with the sodium. So that's why again more calcium is accumulated in the cell. ये calcium, this calcium goes in the sarcoplasmic reticulum to ryanodine 2 ryanodine receptor calcium channel and stored in the sarcoplasmic reticulum. Now, when the signal comes, when calcium enters into the myocardial cell via L type of calcium channel for the second systole, during systole, so due to this calcium, the calcium release from sarcoplasmic reticulum is more. यहाँ से बहुत ज़्यादा कैल्शियम रिलीज होगा एंड ज़्यादा कैल्शियम इंटरेक्ट करेगा ट्रोपोनिन प्रोटीन सी, तो मोर कॉन्ट्रैक्शन होगा, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा. दैट्स हाउ द whatever blood is present in the ventricle, that is pumped out forcefully because of the digoxine. So positive inotropic action. So cardiac glycoside, so they have a positive inotropic effect. Cardiac glycoside मतलब क्या? Digoxine and digoxine. They are often formed digitalis purpurea, digitalis lenta. We have already seen in the pharmacology. Okay? So result from altered excitation and contraction coupling of calcium ion. Calcium entry is regulated by L type of calcium channel in the cell. Sodium calcium exchanger and calcium ATPase, and indirectly by sodium potassium activated ATPase and sodium hydrogen exchanger. Now digitalis acts as a potent positive inotropic agent. It directly binds to the membrane bound sodium potassium ATPase pump, which can be called as a digitalis receptor. And because of binding of this digoxine to the sodium potassium ATPase pump and inhibition of sodium potassium ATPase pump, this prevents the extrusion of sodium and hastens the entry of sodium into the cell during the resting phase. Intracellular sodium ज़्यादा जमा होता है. With the sodium, calcium will also comes inside and remains intracellularly. Because of the depressed function of sodium and calcium exchange pump, more calcium will accumulate in the cell, which will be stored in the endoplasmic reticulum. This okay, and whenever another calcium ion will come during the next systole, so more calcium will be released from the endoplasmic reticulum, sarcoplasmic reticulum, and forceful contraction of the muscle will there, which later will activate the chain of myosin and later combine with the actin and actomyosin muscle contracts. Forceful contraction होगा ऐसा, तो है ना. You can see over here again, यहाँ पे देखो cardiac glycoside inhibit the sodium potassium ATPase pump, so that leads to accumulation of intracellular sodium, which prevents the extrusion of calcium by sodium calcium exchanger. तो calcium बाहर नहीं जा सकता, and also increases the entry of calcium through calcium channel. So ultimately more intracellular calcium is there. Okay, and that also result in the more calcium stored in the sarcoplasmic reticulum. ये सब कैल्शियम इसमें sarcoplasmic reticulum में जाता है, and during the next systole more calcium released during the
depolarization and forceful velocity of contraction. Forceful contraction is there. So in a cardiotonic किसको बोलते हैं? So which increases the force of contraction. So that's why it is a positive inotropic drug. Positive inotropic drug. Same is explained over here also. ये भी diagram उसी का है. ये भी diagram उसी का है. देखो what digitalis does. Normally क्या होता है? Normally during the depolarization sodium will go inside the cell. है ना? Sodium will go inside the cell. sodium आ गया यहाँ पे. Now sodium is exchanged with the potassium by sodium potassium ATPase during the diastole. जब diastole होता है तब सोडियम पोटेशियम एटीपेज क्या करता है? सोडियम को बाहर रखा देता है, पोटेशियम को अंदर लेकर आता है. पोटेशियम इज नोन एज अ इंट्रासेलुलर कैटायन. ठीक है, बट डिजिटलिस inhibit this pump. So sodium will remain inside the cell. सोडियम इनसाइड द सेल रिमेन होता है ना. तो ये सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज पंप जो है वो सप्रेस हो जाता है. दैट्स व्हाई सोडियम इज नॉट एक्सचेंज विद द कैल्शियम. कैल्शियम रिमेन्स इनसाइड द सेल. सोडियम के साथ में कैल्शियम भी अंदर रहता है ना. एंड अगेन calcium comes inside the cell from L type of calcium channel. So more calcium will be there, which is stored in the sarcoplasmic reticulum during the diastole. But during the next systole, when calcium will come inside the cell, this calcium will trigger the release of more calcium from the sarcoplasmic reticulum, and this increased calcium will interact with the actin myosin complex, will bring about the forceful contraction, so that the whatever amount of blood is present in the left ventricle will be pumped. Left ventricle में जो जितना भी अमाउंट का ब्लड है वो सब क्या होगा? फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जाएगा. राइट. तो what are the pharmacological effect or actions of cardiac glycoside? है ना. So what are the actions on contractility? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है? ये बढ़ता है. ऑब्वियसली यू कैन सी ओवर. व्हाट इज द एक्शन ऑन कॉन्ट्रैक्टिलिटी? इंक्रीज इन द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी ड्यू टू विच कंप्लीट वेंट्रिकुलर एम्प्टिंग इज देयर. पूरा वेंट्रिकल एम्प्टी हो जाता है. एंड इंक्रीज द पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस. इंक्रीज इन द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विदाउट कंज्यूमिंग मोर एनर्जी. सो दैट्स व्हाई कार्डियोटोनिक. पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट इज देयर. पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट इज देयर. राइट. तो हार्ट रेट क्या करता है? टू डिक्रीज द हार्ट रेट. नेगेटिव क्रोनोटोपिक इफेक्ट. तो डिजिटल इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है. तो डिजिटलिस हैज ऑप्शन ए देंगे आपको पॉजिटिव आइनोटोपिक इफेक्ट, पॉजिटिव क्रोनोटोपिक इफेक्ट, पॉजिटिव लूसिटोपिक. इनके बीच में कंफ्यूज करेंगे. तो डिजिटलिस क्या करता है? इट हैज अ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट. फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है. बट निगेटिव क्रोनोटोपिक मतलब हार्ट रेट डिक्रीज करता है. निगेटिव क्रोनोटोपिक. सो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, निगेटिव क्रोनोटोपिक. What is the action on what is the effect on the refractory period? Or digitalis will increase the refractory period. Will increase the refractory period means what? Dose dependent prolongation of effective refractory period. Refractory period बढ़ता है. मतलब हार्ट को बार बार कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा है, एक ही बार कॉन्टेक्ट कर रहा है ना. रेट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना, हार्ट रेट कम हो रहा है बट जो रेट है उसमें फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. So effective refractory period is decreased. The AV conduction is also decreased. AV conduction at a AV node is decreased because of the vagal action of and shortening of ventricular refractory period by direction. Conduction velocity के ऊपर भी क्या है? कम करता है. तो increase the conduction velocity at atrium but decrease the conduction velocity at a ventricle. Ventricle में कम conduction velocity है. That's why a proper ventricular emptying is there. Automaticity भी कम कर है ना. Automaticity, so increase the automaticity which leads to ventricular extrasystole and even ventricular fibrillation. So automaticity increase करता है and that's why digitalis can induce the cardiac arrhythmia. Blood pressure के ऊपर क्या है? Increase in the blood pressure in normal subject but no change in the pressure with the congestive heart failure. Decrease in the venous death. Digitalis and calcium
And calcium ion increases the force of conduction, and that's why digitalis act synergistically with the calcium, and digitalis toxicity is increased by calcium. Digitalis toxicity also increased by hypokalemia. ECG के ऊपर क्या चेंज है? Changes in the T wave and ST segment, changes in the P wave and PR interval. QT interval is shorter. Now extra cardiac action of digitalis, kidney के ऊपर क्या है? Diuresis in a patient with a congestive heart failure, which leads to shifting of fluid into circulation. Improvement in the renal circulation, which leads to increase the sodium excretion. Also inhibit the renin. GIT के ऊपर क्या है? It produces the anorexia, nausea, diarrhea due to stimulation of CT cell, है ना. ADME एब्सॉर्प्शन तो होता है उसका कंप्लीट. इट हैज अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट, याद रखना है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, स्लोली एब्सॉर्ब होता है, स्लोली, है ना. तो क्यूमुलेटिव लार्ज टाइम तक बॉडी में रहता है. तो एब्सॉर्प्शन इज 90%, एब्सॉर्प्शन इज कंप्लीट, और यू कैन से 100%. आफ्टर एब्सॉर्प्शन 90% ड्रग इज बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, मेटाबोलाइज इन द लीवर, goes extensively on a इंट्रोहेपेटिक साइक्लिंग, लॉन्गर हाफ लाइफ होता है इसका, एंड हैज अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट. एडवर्स रिएक्शन क्या है? कार्डियोटॉक्सिसिटी. देखो, डिस्टर्ब्ड impulse generation and formation, so that's why there is a arrhythmia. Conduction impulse disturb in the impulse formation and conduction, both due to formation of ectopic pacemaker. So multifocal extrasystole bigeminy followed by partial और कंप्लीट एवी ब्लॉक. मतलब ये पर्टिकुलरली यहाँ पे इन शॉर्ट ये अरिथमिया करता है. डिजिटलिस कैन इंड्यूस अरिथमिया. हाइपोकैलेमिया फ्रॉम एनी कॉज, हाइपोकैलेमिया ऑफ एनी कॉज, किसी भी रीजन से कारण पोटेशियम लेवल कम हो गया, दैट कैन कॉज डिजिटलिस टॉक्सिसिटी. हाइपरकैल्सीमिया आल्सो कैन कॉज टॉक्सिसिटी. कॉर परमोलिटी, है ना, core pulmonally is treated with the digitalis. It increases the cardiac toxicity. Digitalis can induce arrhythmias. GIT के ऊपर तो अपने देखा है. Neurological toxicity क्या है? It can result in the vertigo, visual disturbances, blurring, photophobia, disturbance in the color vision, tingling sensation in the and numbness in the lips, confusion, disorientation, delirium and psychotic behavior. तो फास्ट ले रहा हूँ. एडवर्स रिएक्शन क्या है? देखो, स्किन रैश, गायनेकोमेस्टिया, प्रीमैच्योर बर्थ, ECG चेंजेस. डिजिटलिस टॉक्सिसिटी इज इंक्रीज बाय, है ना, डिजिटलिस टॉक्सिसिटी अगर हो गए तो दैट इज ट्रीटेड बाय पोटेशियम सॉल्ट, है ना, पोटेशियम सॉल्ट. डिजिटलिस इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एवी ब्लॉक, हाइपोकैलेमिया, सीवियर रीनल insufficiency. Beta blockers, yeah, beta blockers are used in case of supraventricular tachyarrhythmias, which is induced by disease. Yeah. Ventricular tachyarrhythmia is treated with the lignocaine and phenytoin. Specific antidote for digitalis, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. What is the specific antidote for digitalis? Known as the DG-bind. DG-bind is a specific antidote. DG-fab is a specific monoclonal antibody against the digitalis. Ovine, Digoxine specific antibodies. These are indicated in case of digitalis toxicity. Digitalis का ओवरडोज हो गया, टॉक्सिटी हो गया, इसमें ये यूज करना है. क्वेश्चन आ चुका है. यूजेस का है डिजिटालिस का. डिजिटालिस इज यूज्ड इन द कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, आल्सो इन आरिथमिया, है ना, आल्सो इन द लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, आर्टेरियल फिब्रिलेशन, फ्लटर, इसमें यूज करना है. डिगोक्सिन इज यूजफुल इन द क्रॉनिक प्योर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, ना, एक्यूट वेंट्रिकुलर फेलियर विद पल्मोनरी एडिमा, उसके साथ में फ्यूरोसिमाइड भी देना है. फ्यूरोसिमाइड, नाइट्रेट्स, इनहिबिटर्स, एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर. Along with the morphine, sodium nitroprusside, aminoperin, inotropic drug. Other inotropic drug कौन से? Dopamine. It will act on a dopamine receptor D1, D2, D3, plus it will act on a alpha and beta receptor. It will block the beta receptor, beta blocker like action. Dopamine, particularly beta blocker, amrenon, milrenon, ये क्या है? vasoconstrictors inhibitor. Digitalis is very useful in case of heart failure, which is related associated with the arterial fibrillation or ventricular, with rapid ventricular rate.
It is useful in the low output failure, valvular hypertension, congenital disease. It is of limited use or limited value in a high output failure. The high output failure तो उसमें use नहीं है. High output failure, cardiac heart failure due to anemia, toxicity, very arteriovenous fistula, cardiac pulmonary. It is not effective. No use of digitalis in mitral valve stenosis, constructive pericarditis, restrictive cardiomyopathy. It is contraindicated in patient with AV block, hypertrophic cardiomyopathy. कॉन्ट्राइंडिकेशन बहुत है. हाइपोकैलेमिया में यूज नहीं करना है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में यूज नहीं करना है, थायरोटॉक्सिकोसिस में यूज नहीं करना है, मैक्सिडेमा वेंट्रिकुलर टैक्कार्डिया में यूज नहीं करना है, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम उसमें भी यूज नहीं करना है. कॉन्ट्राइंडिकेशन में याद रखो, हाइपोकैलेमिया, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, थायरोटॉक्सिकोसिस, मैक्सिडेमा, वेंट्रिकुलर टैक्कार्डिया, वुल्फ पार्किंसन सिंड्रोम. Digoxine and digoxine only inotropic drug that can be given orally. अगर थोड़ा सा फास्ट हो रहा है तो अपन फिर से देखेंगे. तो विल सी digoxine again later on, probably on a Tuesday को ये फिर से digoxine से अपन देखेंगे. ये थोड़ा सा फास्ट हो रहा है. उसके बाद में इसके ऊपर मतलब डिगोक्सिन से मैं फिर से एक बार लूँगा. अगर आपको समझ में आया होगा तो यू हैव वन मोर चांस. ठीक है, तो ऑन अ ट्यूसडे विल सी. एंड उसके ऊपर अभी मैं टेस्ट में एक टेस्ट भी डाल दूंगा. तो टुमारो आई एम नॉट अवेलेबल, टुमारो विल नॉट बी अ लेक्चर. कल मैं नहीं हो, कल लेक्चर नहीं होगा. परसों मैं फिर से थोड़ा बहुत डिजिटल इसका, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने फास्ट लिया है ना. तो ट्यूसडे को फिर से अपन ये लेक्चर लेंगे कि डिजिटलिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके एडवर्स इफेक्ट वगैरह एंड रिमेनिंग पार्ट. सो ट्यूसडे विल ट्राई टू फिनिश दिस कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. बहुत अच्छे तरीके से मैंने जितना मुझे समझा है मैंने आपको समझाया. ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.